Hi guys, I'm your host Gaurav Sopti and welcome to channel Home Gram. So first of all, happy New Year's to all our viewers. So 2022 was massive success for housing sales. बहुत अच्छा गया है last quarter. We have seen that 2022 में last 10 years की recorded sale break हो गई है. So आगे चलते हैं and we believe that 2023 will be even massive than 2022. So we are here at Smart World 1 DXP, the gateway of Gurgaon. So the location is so premium. I will be telling you every single thing about project. And yes, big billion property fest, 21st to 24th of January. So we'll be covering this video. First, we'll tell you about project. Then in series of video, we'll be telling you about scheme. So Smart World 1 DXP. Let me show you how it connects. What is the location? This is specifically on 150-meter wide road of Dwarka Expressway, 8-lane expressway. Yeah, then your 4-lane service lane. Then there is entry, direct access of the site. So 16-acre land parcel mein they are building luxurious floors. There are two more things. One is retail plaza, another is commercial plaza, which is upcoming. So retail they'll be launching in another 10-15 days. We'll be covering this also. अभी हम सिर्फ residential apartments की बात करते हैं. So 16-acre land parcel. In the 16-acre land parcel, they have done very beautiful things. So UHA London has designed this project. And if we talk about landscaping is done by your Element Singapore. So very good water bodies are there. Let me tell you one thing, out of 26 RERA registered project on Dwarka Expressway, this is one of the project which is having the biggest water body. So you will be having beautiful lagoons in terms of there are multiple water feature area, then landscaping is there in central green vista area. So we'll be showcasing you that. So as you can see, there are 8 towers, 4 on my left hand side and 4 on my right hand side. So A, B, C, D and E, F, G, H. They have recently launched these 8 towers. So in pre-launch we have sold many good inventories. Now also there are some inventories which are left. So A, B, C, D towers, if we talk about these towers, half of the towers are having city facing view. So once we talk about city facing, this straightforwardly means that you will be getting a very good view of Dwarka Expressway, and the afternoon sunlight will be coming down here. So these are how your balcony will look like. And there are deck units also. So we have sold many big units in which you were getting actually deck. So the vehicle movement is on outer periphery. So there is no vehicle movement inside the campus. So basement में आपको car parking मिल रही है. There are 2 level car parking. आगे मैं आपको दिखाता हूँ how they are actually making the biggest clubhouse. So once we come down here, this is the social clubhouse. So social clubhouse अगर हम देखेंगे, ये social clubhouse जो है 40,000 स्क्वायर फीट में है. तो 40,000 स्क्वायर फीट में एक क्लब हाउस ये बन रहा है. उसके बाद आगे आप चलेंगे तो वॉलीबॉल कोर्ट है. वॉलीबॉल कोर्ट के बाद then your another towers are there, E, F, G, H. Let me tell you one more thing. ये जो साइड है ना, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ग्रीनरी मिलने वाली है. रीजन क्या है, कोई भी द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्रोजेक्ट नहीं है जिसके अलोंग 250 एकड़ का ग्रीन एरिया है. सो दिस इज अ रिजर्व फॉरेस्ट लैंड विच इज जस्ट एडजेसेंट टू आवर साइड. मतलब यहाँ पर पूरा दिल्ली लग जाता है एंड इट विल बी ग्रीन फॉर एवर. सो ऑल दीज यूनिट्स आर योर ग्रीन फेसिंग, दिल्ली ग्रीन फेसिंग. तो यहाँ पे हमेशा ग्रीनरी रहने वाली है, बड़ा अच्छा पीसफुल एनवायरमेंट रहने वाला है. दे आर बिल्डिंग 1,20,000 स्क्वायर फीट क्लब हाउस. वन सोशल क्लब हाउस आई हैव शोन यू. दिस इज स्पोर्ट्स क्लब हाउस. सो स्पोर्ट्स क्लब हाउस में सारी इंडोर फैसिलिटीज रहेंगी. एंड अपार्ट फ्रॉम देयर यू सी द लगून एरिया. सो लगून की अगर हम बात करें, जो अमेनिटीज आने वाली है लगून में, दैट इज वे टू डिफरेंट. So trampoline is there, swings are there, your water bodies are there, kids pool area is there, kids water play is there, then your tunnel, toddler play area, amphitheater, half basketball court, fitness station, pet park, volleyball court. इतनी सारी चीजें हैं. मतलब 1,20,000 स्क्वायर फीट में अगर आप बात करें, 1,20,000 square feet is a very big area for amenities. That too with 16-acre land parcel and the lagoon, which is the main thing. The water bodies which they are building, it is totally different. So this project is actually, if we talk about the luxurious things, the amenities, it is way too different from every single project. So 2.5, 3.5, 4.5 BHK के options थे. 2.5 BHK is fully sold out. Now they are hardly left with 3.5 BHK inventories.
3.5 प्लस सर्वेंट की इन्वेंट्री है और फिर 4.5 प्लस सर्वेंट है। सो स्टार्टिंग जो है साइज 1380 स्क्वायर फीट से शुरू होकर इट गोज अप टू 2590 स्क्वायर फीट। सो दे हैव केम अप विद अ वेरी बिग योर स्कीम। तो सबसे अच्छी स्कीम की अगर हम बात करें, इट्स बिग बिलियन प्रॉपर्टी फेस्ट विच विल बी फ्रॉम 21 to 26 जनवरी। इसी में ही ये प्रोजेक्ट को भी शोकेस कर रहे हैं। देन स्मार्ट वर्ल्ड की इस बैनर के नीचे जितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं सब में बहुत अच्छी स्पेशल स्कीम्स आ रही हैं। विल बी कवरिंग दिस स्कीम स्पेशली फॉर स्मार्ट वर्ल्ड रिटेल एंड फॉर स्मार्ट वर्ल्ड रेजिडेंशियल 1 DXP। ये पूरा कवर करेंगे हम और आपको बताएंगे क्या क्या स्कीम्स में आना है। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच गाइज। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।